गुड मॉर्निंग और हमारे LSPS की तरफ से आप सभी को हैप्पी नेशनल प्रेस डे। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हम मीडिया वाले हैं वो एक मिरर है जहां हर चीज़ साफ और ट्रूथ देखना चाहिए। हम हमेशा पब्लिक के लिए काम करते हैं, पब्लिक का जो ओपिनियन है, उनका जो इंटरेस्ट है, वहाँ हम जितना जो आंसर्स है उन तक पहुँचाते हैं। जो इम्पोर्टेंस रोल है हमारा, जो हम हमेशा पब्लिक के लिए काम करते हैं, उसी को हम लोग हमेशा सोचते हैं कि पब्लिक को किस तरह हम लोग प्रोटेक्ट करें, कैसे ट्रूथ और फेयर लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि एज ए मीडिया हम बायस नहीं हो सकते हैं। तो ये सब को सोचने के बाद हमारा जो द प्रेस काउंसिल है, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो हमारे लिए एक जो 1966 में नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेशन का एक स्टार्ट किया गया था, उससे लेके आज तक हम 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करते हैं। हम मीडिया कहे तो सिर्फ एक नहीं होता, काफ़ी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग, विजुअल, रेडियो, ये सभी होता है। तो उसमें सब जो मीडिया का रोल यही रहता है कि हम किस तरह पब्लिक को अवेयर करें, जो सच्चाई है वो पहुंचाएं। First of all, good morning to all of you. It's given me a great pleasure to welcome to you all to the National Press Day Celebration 2023. I would like to take this opportunity to extend a warm welcome to our guest, Dipro in charge of Lower Subansiri district, Sri Gyati Kacho sir. Welcome sir. IPR Secretary of Apatani Women Association Ziro, Dr. Mudang Rita ma'am, welcome. And Convener of Apatani Student Union, Sri Habung Vivi sir, welcome sir. And IPR Secretary of All Ziro Hapoli Youth Association, Tiling Tari sir, welcome sir. And Head of the Department of Mass Communication Department from St. Claret College, Horinting Lungling sir, welcome you sir. And Assistant Professor from St. Claret College Ziro, Sri Doni Natung sir, welcome you sir. And Assistant Professor from St. Claret College Ziro, Sri Amilo Kado sir, welcome sir. And all the students of Mass Communications Department from St. Claret College, we welcome you all too. And thank you all for joining us with your presence and support. I would also like to thank our organizing team for their presence and support. I would present support for their work in the planning and execution for this event. In closing, I wish very good luck to all the participants of extempore speech competition. Once again, heartfelt thanks to each and everyone for being here. Thank you all. Let's continue our celebration. Thank you. विशिंग बहुत आपके लिए बड़ा रहेगा सर। मैम को दे दीजिए। कहना चाहूँगी कि आप उनको प्रेजेंट करें सब। Very big issue that I have seen. Good morning everybody. My name is Tagar Killo, first semester Mass Communication from St. Claret College Ziro. So the topic I have got from the cheat paper is ethical reporting. I'm from Mass Comm Department, first semester, St. Claret Ziro. So Good morning to all. My name is Nabun Nuchum and I'm from St. Claret College Ziro. Good morning to all, respected our judges and our respected guests for today's event, and all my brothers and sisters. A very good morning to everyone present here, respected the judges, the guests, my dear friends, and all my juniors. Good morning, everyone. My name is Henny Poing, and my respected judges and
respected guests, and all my dear audiences. One and all present here, respected our judges, special guest, team LSPS, and all the students. So my name is Ms. Ramtar Julian, Department of Mass Communication, 5th semester from St. Claret College. Good morning, everyone. Good morning, judges. Very fine. Good morning to everyone present here. Respected judges, special guests, and all my dear audience. My name is Soromina. I'm currently pursuing my BA in Mass Communication 5th semester at St. Claret College Ziro. Respected guests, staffs, audience, and teachers. My name is Minchitaru, and I am from 5th semester, St. Claret College, Mass Communication. ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है तालियांग पगंग सर को यहाँ पर स्पीच देने के लिए बुलाएंगे। उनकी तरफ से भी हम कुछ सुनना चाहेंगे नेशनल प्रेस डे की तरफ से। तो सर प्लीज़ आप अपना टाइम ले लीजिए। Good morning, everyone. First of all, respected today special invitees, Gyati Kacho sir, District Information and Public Relation Officer, and respected Mudang Rita ma'am, IFAR Secretary, Awaz Apatani Women Association, Ziro, and respected Tage Riku sir, IPR Secretary, Apatani Youth Association, Mr. Habung Mebe, Convener, Apatani Student Union, and Tiling Tari, IPR Secretary, All Zero Hapur Youth Association, and Mr. Solomon sir, लुंगलिंग सर जो HOD है मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सेंट क्लेयर कॉलेज, उसके साथ में आए असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर मिलो कादो सर, एंड उसके साथ आए दोनी नाटुंग सर असिस्टेंट प्रोफेसर सेंट क्लेयर कॉलेज, एंड स्टूडेंट फ्रेंड्स, ऑल द मीडिया हाउस हु प्रेजेंट हियर एंड माय कलीग्स। सबसे फर्स्ट मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आज हमारा चेयरमैन सेक्रेटरी कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम के कारण से आउट ऑफ स्टेशन गए हैं, फिर भी हमने ये प्रोग्राम को रखा है, कंटिन्यू रखा है। आज ऐसे आई एम ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन, हमने इसको कंटिन्यू रखा, उसका ब्लेसिंग हमें से रहा है। अभी भी आप विश किया कर रहा था कि ये सक्सेस होने के लिए उनसे ब्लेसिंग ही हमेशा हमें रहा है। ऐसा नहीं है कि वो ऑप्शन है तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। एंड फर्स्टली मैं बताना चाहता हूँ कि ये शुरुआत कैसा हुआ। ये फर्स्ट बार हम लोग ने नेशनल प्रेस डे आज सेलिब्रेशन कर रहे 2023 हमको ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन के तौर पे दिया। एक्चुअली हम सबको बताना चाहते हैं कि इसको बहुत बड़ा से मनाने वाला था इस बार। मैं सबसे पहले बता दूँ कि आज एक्चुअली हमने एक वर्कशॉप रखने के लिए कोशिश की। वर्कशॉप इसलिए हमने सोलोमन सर वो HOD सर से हमने ऑलरेडी टाइप करके रखा था, वर्कशॉप रखेगा। उसमें हम लोग रिसोर्स पर्सन के तौर पे हम आज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट RU से भी बात करके रख चुका था। उन्होंने भी HOD ने हमको 2 असाइन कर दिया, उधर से 2 फैकल्टी असाइन कर दिया था। एंड हमने कोशिश किया था कि ऑर्गेनाइजेशन प्रेस क्लब से भी हमने बुलाने के लिए कोशिश किया इस बार यहाँ पे रिसोर्स पर्सन के तौर पे। और एक्चुअली ये आज ही का दिन को हमने हिस्ट्रिकल इवेंट बनाना चाहा। वो क्यों? एक्चुअली LSPS जो आप देख रहा है, लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी, ये जो है ऑलरेडी हमने लास्ट टाइम आज ही का दिन पे हम लोग LSPS ने रिप्रेजेंट किया था APC में, जब उधर पे नेशनल प्रेस डे को उधर पे ऑब्जर्व कर रहा था, तब हम लोग ने भी उधर जाके पार्टिसिपेट किया। करने के बाद हम तब से हम लोग बोलते आ रहे हैं कि एफिलिएशन दें, हम लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी को प्रेस क्लब में चेंज करेंगे, एफिलिएशन आप लोग दे देने से उसमें क्या होगा कि बहुत सारा बेनिफिट भी रहेगा, ऐसे करके था। तो इस बार
APC से उन लोग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं भेज पाया, क्योंकि उन लोग भी आज के दिन को उन लोग मना रहे हैं नेशनल प्रेस डे। उधर पे आई थिंक DCM आया हुआ है, तो उसका वजह से उन लोग बिजी होने के कारण आज उन लोग रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे नहीं भेज पाया। उन्होंने फिर भी बोला कि आप लोग का प्रोग्राम का कंटिन्यू रखिए, तो नेशनल प्रेस डे के बाद में हम लोग देखेंगे, इसको गाइडलाइन पूरा प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद अगर एप्लीकेशन मिल जाता तो बहुत अच्छा बात होगा। नॉट ओनली फॉर मी, हम लोग सोसाइटी, ये सोसाइटी कैसे फॉर्म हुआ, अभी हो गया 1 साल तो क्रॉस कर चुका है। ये जो 6 अक्टूबर 2022 को ये हमने इस्टेब्लिश किया। क्यों? सबके लिए, क्योंकि हमारा लोअर सुबनसिरी में बहुत सारा मीडिया हाउस आने लग गया, तो हमें कहीं ना कहीं लगा कि इसको एक साथ ले जाना चाहिए इंटीग्रिटी। और कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि इसको जर्नलिज्म में मास कम्युनिकेशन जैसे करने के बाद भी ऊपर आने के अनएम्प्लॉयमेंट रह जाता है, तो क्यों ना हम सोसाइटी के लिए वो करें। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते आया है। आज जैसे फर्स्ट पर हम लोग ये फर्स्ट नेशनल प्रेस डे को हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं, तो हम लोग और भी करेंगे। अभी हम जैसे बात किया है कि एप्लीकेशन भी मिल जाएगा तो और भी अच्छा होगा कि अपना डिपार्टमेंट ये सेंट क्लेयर कॉलेज तो है ही, और जितना भी यहाँ पे वर्किंग जर्नलिस्ट है सब के लिए ही बेनिफिट्स होगा। एंड देन हम LSPS खोलने के बाद भी उधर में रिप्रेजेंट किया, हम लोग सोसाइटी के लिए करते आए हैं, और काफ़ी सारे ये रिपोर्टिंग करने के लिए अचीवमेंट भी किया है। 1-2 चीज़ भी है जो LSPS की वजह से शायद सोसाइटी में आज लोअर सुबनसिरी में एटलीस्ट थोड़ा सा ये वर्किंग जर्नलिस्ट और मीडिया उसको थोड़ा सा ऊपर में लाया है। तो हम लाते जाएंगे, स्टेप वाइज चलते जाएंगे उसको। मैं होप करता हूँ, और सभी को सपोर्ट और स्टूडेंट को भी हमेशा फोकस रहना है। अभी जो फील्ड में है एकदम फोकस रहना है टिल द गोल ना, जब तक गोल रीच नहीं करता तब तक वो करना है ना। एंड आज खास मौके पे डिप्रो सर यहाँ पे आया हुआ है। मैं हमेशा मतलब LSPS की तरफ से आपको रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि हम साथ मिलके हमेशा काम करेंगे। और कुछ चीज़ ऐसे होता है कि हम भी नहीं जानते, और कुछ चीज़ ऐसे भी होता है कि मैं भी गवर्नमेंट का तरफ से कुछ बेनिफिशरीज या ऐसे कुछ भी बेनिफिट्स हो या कुछ इंफॉर्मेशन शेयरिंग करना हो, तो हम हमेशा से ऐसे आशा करते हैं कि आप हमेशा हम लोग साथ में रहेंगे। और साथ में आज आए HUD सर जो सोलोमन सर आज आए हैं, वो तो साथ देते आए हैं 6th जो जब हम तारो चातुंग सब मालूम है, तारो चातुंग जो लेट तारो चातुंग जी ने कितना कंट्रीब्यूट किया ये फील्ड में। एंड देन उसका लास्ट डेट एनिवर्सरी हम लोग ने ऑब्जर्व किया, उसमें भी सेंट क्लेयर कॉलेज बहुत बढ़िया से प्रेजेंट किया, तो उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और इन फ्यूचर भी आपसे होप करता है कि हम लोग हमेशा साथ में करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे, LSPS हमेशा कोशिश करेगा कि कैसे नॉलेज दे, इसको कैसे आगे बढ़ा के ले जाए, वो है। और साथ ही साथ में स्टूडेंट वाला को वही है कि सब आज भी एक्सेप्ट पर स्पीच रहा। कहीं ना कहीं हम आज एक यहाँ पे मिलने का कारण एटलीस्ट मतलब ये जर्नलिज्म फील्ड को थोड़ा सा ऊपर लेके आ रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी कुछ शेयर कर रहे हैं, तो इंटरेस्टेड और भी जागे, और कल को अपना यंगर वन को भी इंस्पायर करके लेके आना है कि अपना फील्ड में मतलब कुछ करके दिखाना है। अभी हम लोग प्रूव करना है। एंड देन और सभी मेरे दोस्तों मीडिया हाउस लोगों में मैं यही गुजारिश करता हूँ कि सर्टेन चीज़ ऐसे होते कि हम एक दूसरे पे ही समटाइम्स मीडिया हाउस, अभी हम लोग आप देख रहे हो कि अभी 6 एक्टिव मीडिया हाउस है लोअर सुबनसिरी के अंदर पे, तो हम कंपटीशन जरूर है, एक दूसरे का कंपटीशन करना, वो हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ना कि एक दूसरे को खींचा ऐसा नहीं है। सब आगे लेके जाना है विथ प्रिंसिपल और एथिक्स बेटर। मैंने आप लोग की बहुत मैंने उसको बारीकी से जानता भी है, इसको अप्लाई करते हुए एक दूसरे को साथ में लेके जाना है, मैं ये भी गुजारिश करता हूँ। एंड फाइनली मैं ज़्यादा नहीं बोलते हुए सभी को आज आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब ने हम सबको थोड़ा इनवाइट किया, सब मतलब रिस्पेक्ट देते हुए आज यहाँ आया, इसके लिए थैंक यू। एंड लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि लास्ट तारो चातुंग डेट एनिवर्सरी जब हम लोग में उधर गया तो हमने एक डिक्लेरेशन किया, नेक्स्ट 26 अक्टूबर वो तारो चातुंग का डेट एनिवर्सरी है, तो हमने लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी इसको जर्नलिस्ट राइजिंग डे करके डिक्लेयर किया गया है।
वो चेयरमैन सर का तरफ से किया गया था। तो आज मैं फिर से बता रहा हूँ। तो उसमें हम लोग आज मैंने पहले जैसे बोला था वर्कशॉप वगैरह एंड उसमें भी हम लोग कंपटीशन वगैरह रखेंगे। थोड़ा बड़ा नहीं होगा, फिर भी हम लोग उसको ऑब्जर्व जर्नलिस्ट राइजिंग डे के नाम पे हम लोग उसको मनाएगा। तो उसमें भी हम होप करते हैं कि सेंट क्लैरेट कॉलेज इसी तरह पार्टिसिपेट करेगा और साथ में दीपक सर भी साथ देंगे और आवाज़ भी आया, आंसू आया, अजिया जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट फ्रेंड लोग भी सर लोग भी सब साथ देंगे सबको। मैं इतना में मेरा समाप्त करता हूँ अपना वर्ड को। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर मुदांग रीता मैम, प्लीज़ आपसे गुजारिश करते हैं जो कि हमारे IPR है आपातनी वुमेन एसोसिएशन ज़ीरो के, आप यहाँ आए और जो बच्चे और हमारे जितने मीडिया फ्रेटर्निटी से उनको चंद सब कहें। Really delighted to join you all here celebrating National Press Day here in Ziro. So the students and fraternity representing St. Claret College Ziro देख करके बहुत अच्छा लगा। और डिप्रो सर भी यहाँ आए हैं, ही इज़ अ गाइडिंग स्टार फॉर ऑल ऑफ अस। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इफ़ आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, आई थिंक आई वुड नॉट बी sharing something related to media here, because professionally you are growing, your professional guides are there. I am not professional in this. Of course I have a special interest for media, and this day has become more special for me. Why? Because coming over here, getting the invitation, celebrating this special day of media is something special for me, in the sense that I am connected to the memory land where I see most beautiful days which I spent. जो मीडिया से मेरा नाता था, जो सेंट क्लैरेट से मेरा नाता था, वो आज मुझे फिर से मतलब मौका मिलके मैं यहाँ सेलिब्रेट करने आई तो मेरे लिए स्पेशल है। क्यों बोलने से, ऐसे मीडिया, I am from All India Radio, I am the authorized voiced. I have qualified for the audition also, but destiny has its own plan. No, I could not continue there. And from the very Prasar Bharati, many sponsored programs has my voiced over. I have given my voice on many programs sponsored by Prasar Bharati. And for Doordarshan Kendra Itanagar also, I have some advertisement over there. मैंने किया है, उन लोगों के साथ भी मेरा बहुत लंबा नाता था. And here also Tachang sir, this program executive, now All India Director of Ziro, he has been inviting me, but because of my own busy schedule, I am unable to give him time. I have number of scripts written also for the programs, but I could not attend. That is a different thing. Again, when I say coming back to St. Claret, how I'm connected to St. Claret, I would be very, very delighted to share you that I am one of the alumni of SCCZ. Why? Because I was a faculty of language over there. And that time Father Sabu and Father Binoy were respective heads of the college, and your Father Ernest, he was my student. That time he was Brother Ernest. Okay, since you are here, I will be very much pleased to send my regards and love to the fraternity of SCCZ. Please convey them that Rita ma'am was there and you were together this morning, in the function. And जैसे कि मीडिया और वॉच डॉग के बारे में आपका रिपोर्टर्स जर्नलिस्ट लोगों ने बताया है वॉच डॉग कैसे है करके, और सही में बताया जाए तो आप लोगों ने तो शायद इसका कंसेप्ट तो पूरा ले लिया होगा ना, फिर भी मीडिया में जब है तो गिव अप नहीं करना है, जैसे बताया है ना। आप लोगों को क्रिटिसिज्म, मोस्ट बोल्ड पर्सनालिटी इन ऑन द स्टेज इन फ्रंट ऑफ बोथ द साइड्स, हु एल्स, इट इज मीडिया. Reporters, what kind of criticism they face, isn't? But then also they are very much bold to face it, and that is the very quality I appreciate and I like it. If
मेरा प्लान कुछ नहीं है, शायद मेरा भी जर्नलिज्म में ही था शायद ना, लेकिन मेरा जो डिग्री है वो आई एम मास्टर इन लैंग्वेज लिटरेचर में है, ठीक है, तो आई कुड अगेन हैव टू फाइंड माई ओन रूट, लेकिन जर्नलिज्म से मेरा इंटरेस्ट है। और जैसे आप लोगों का एल्डर्स ने बताया कि गेट कीपर्स कैसे होता है, फिर आपको इथिक्स के बारे में भी बहुत अच्छा बोला है ना, दिस द वेरी यंग बॉय, बहुत अच्छा बताया है। आई अप्रिशिएट दैट कंसेप्ट इज देयर नो टू शेयर द थिंग्स। और जब मीडिया के बारे में होता है तो आप लोगों से यही मेरा रिक्वेस्ट हमेशा रहेगा कि इवन इफ़ यू गेट चांस टू कवर दिस मीडिया इन टर्म्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, इन टर्म्स ऑफ प्रिंट मीडिया, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नो, you have to be just, isn't it? And you have to be just in the sense that to be a just, again you need to work harder. How you will work harder? You will do a thorough research, right? After thorough research, you will go for media reporting. And to be very honest, I have been talking to your DPRO sir that media, sometimes people think that I am now become DPRO or something related to this media. No, I will be sending some representative over there to collect the information, and I will be sleeping, and I will simply just write down the small reporting on the function or the event, and I will send in the official record. But it is not the thing. That professional flair should be there in you. Okay, and I hope St. Claret has done a very, very magnificent challenge to bring up mass communication department in this beautiful valley. And I hope these beautiful girls, beautiful boys, beautiful youngsters, handsome youngsters of this valley are growing efficiently in the field of mass communication. In the days to come, I hope that brilliant reporting, brilliant writings will come up, and we would be enjoying our days reading beautiful articles, beautiful reportings, beautiful in terms of oral, in terms of written also. And congratulations to each one of you. Each one of you have tried your best to come on the other side to share your views. It is a challenge to stay on the other side. I know the students who could not speak a few words even are very much familiar with topic, but other side is always different, isn't it? So you need to inculcate the habit to come on the other side also. I hope your Solomon sir will give you enough chance to grow, right? And regarding Solomon sir also, because I mentioned, I was in St. Claret, there also during my time Solomon was there. Then yesterday evening, Anupugang rang me to come for the program. He mentioned that Solomon sir is coming. Then I was eager to know. My time also, he was from history department. So Solomon is there. How come I did not get the information? Then he told me that no, sir, he is from mass communication department. I got the confirmation there. So यहाँ पे आकर के हर किसी को देख करके, इवन मेरा सेंट क्लेट के जो बच्चों को हमेशा देखते तो इमोशनल आता है कि मैंने अपने बच्चों को देखा जैसा ना, और फैकल्टी को वहाँ देखते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी वहाँ रह करके बहुत अच्छा मेरा दिन वहाँ गुजारा। और फादर बिनोय, फादर साबू से मेरा ब्लेसिंग्स हमेशा है। मीडिया जो जैसे आप लोग बोलता है आजकल ग्लोबल विलेज हो गया ना, स्टिल आई एम कनेक्टेड विथ फादर्स एंड फैकल्टीज ऑफ SCCZ. थैंक यू सो मच ऑफ यू. हैव ए वेरी वेरी good day, good times ahead. Thank you. जो आया के मेंबर, जो IPR सर आए हुए हैं, उनको मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ, आप भी आकर यहाँ पे बच्चों को कुछ शब्द कहें। Good morning everyone. Respected today's judge, Gyati Kacho sir, Dr. Mudang Rita Miriam and Solomon sir. And also today's organizer, Subansiri Press Society, and all the students here. Actually, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे आप सबका सामने में स्पीच देने के लिए मैं इतना वोट हूँ, फिर भी आप सब ने मुझे एक टाइम दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और यहाँ तक आ गया तो मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहूँगा। आज ये लिटरेरी कंपटीशन का जो आज में चौथा सा जो प्रोग्राम एक्सटेम्पोर स्पीच कंपटीशन हुआ है, तो उसको देख के ये सब चीज़ से मैं बहुत देर हो चुका हूँ, दूर रह चुका हूँ। तो लेकिन आज का प्रोग्राम को देख के मैं अपना बचपन का याद आ गया कि मैं भी के प्राइमरी गवर्नमेंट स्कूल से एक ब्राइट स्टूडेंट हुआ करता था।
रैंक होल्डर था मैं उस समय। तो इसके बाद मैं नवोदया लोअर सुबनसिरी पापुम बड़े का ये फर्स्ट बैच हूँ। तो उस वक्त में भी मुझे एक ऐसा स्पीच देने के लिए बोला था, तो मैं आते ही घबरा गया। मुझे टीचर ने पूरा प्रिपेयर करके मेमोराइज करने दिया, पूरा रेडी था, लेकिन स्टेज में आने के बाद, थोड़ा बोलने के बाद मैं अटक गया। तो वो सब देख के मैं उतना ही बोलना चाहूँगा। आज यहाँ पे जितने भी कुछ नहीं बोल पाया, कोई गिव अप कर दिया, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कभी कभी हम लोग एकदम एक्सेलेंट देने के लिए कोशिश करते हैं तो नहीं दे पाते, इसलिए हम लोग कभी कभार गिव अप हो जाते हैं। तो इसलिए जितना भी यहाँ में दिया है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि यहाँ पे जितने भी हाईली क्वालिफाइड वाला है हमसे आगे है, ये नहीं सोचना है। देखिए आज हम IPR फोर्स में हैं आया में, तो फिर भी आपका स्पेशली ये प्रेस या मीडिया अपॉर्चुनिटी के बोलने से हम खुद को बहुत पीछे सोचता हूँ। तो अभी इवन यहाँ पे हमारा अरुणाचल में ये मीडिया में तो बर्डिंग स्टेज में है। हम लोग तो ये लेजेंडरी तारो चाटुंग का न्यूज़ एंड व्यूज़ देख के आया है, उसमें भी तो कौन सा ये मतलब इतना प्रोपर तो नहीं था, तो अभी भी बर्डिंग स्टेज में ही है। तो ये नहीं सोचना है कि हम एक्स्ट्रा पूरा परफेक्ट नहीं दे रहे, तो यहाँ पे बहुत सारा हमसे आगे वाला, हमसे क्वालिफाइड वाला है, तो डरना नहीं है। तो अभी देखिए हम इतना दिन का बाद देखने के बाद हम खुद को याद आते हैं, फिर हम सोचते हैं कुछ डरने का चीज़ था ही नहीं, हम क्यों डरा ना, यही सोचते हैं। तो इसलिए मैं कॉलेज स्टूडेंट को भी बोलना चाहूँगा, आप आज यहाँ में आज जितना भी बोल नहीं पाए, तो हमेशा एक्सेलेंट देना ही ये मत सोचिए, आप जो भी है उसको डिलीवर करना ही सोचिए। आप लोग तो रोनाल्डो को भी देखा होगा, रोनाल्डो भी तो कौन सा इनिशियल में वो परफेक्ट था, तो आज का दिन में तो उसको एक बहुत परफेक्शन में मानता है। तो वो भी तो पहले परफेक्ट नहीं था, लेकिन वो अपना वर्क में डेडिकेशन हार्ड वर्क डाल के आज ऐसा हुआ है। तो इसलिए और कॉलेज स्टूडेंट यहाँ पे आज जितना भी पार्टिसिपेंट था, तो थोड़ा करेज रखिए, और चाहे आपका कुछ गलती होने से भी वो मायने नहीं रखता है, आप जो बोलना है बोल सकता है कहीं में भी, जो भी कंपटीशन में। एंड ओके, टाइम ज़्यादा ले क्या एनीवेज, और मैं यहाँ का जो ये आपका ये सेंट क्लैरेट प्रोफेसर टीचर्स लोग को भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहूँगा, थोड़ा जितना हो सके आपका स्पेशली ये मास कम्युनिकेशन, उसमें स्टूडेंट को थोड़ा जितना हो सके फेमिलियर रखिएगा, तो मेरा ख्याल से वो प्रैक्टिकल में बहुत आगे जाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब जो स्टूडेंट लोग हैं तो करेज अंडर में टैलेंट जो दब जाता है, तो उसको हम एज ए टीचर हम लोग तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसको करेज देखे ना। और आज का प्रोग्राम जो आप लोग ये प्रेस डे सेलिब्रेशन आपका ये सेंट क्लैरेट मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का साथ कलेक्ट करके रखा है, उसको मैं बहुत वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल कलर डिक्लेयर करता हूँ, माने मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट कलेब्रेशन है। तो इतना में मैं अपना समाप्त करता हूँ, मुझसे भी कुछ बोलने में कुछ गड़बड़ हो गया तो माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूँगी हमारे आंसू के कन्वेनर सर को कि आप यहाँ आए और 2 शब्द यहाँ पर बच्चों के लिए रखें। सबसे पहले तो मैं सभी को वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी इंटरनेशनल प्रेस डे सभी को। और यहाँ जितना भी सेंट क्लैरेट कॉलेज से मास कम्युनिकेशन से आए हैं उन सभी को मैं हैप्पी प्रेस डे कहना चाहूँगा। एंड देन सेकेंडली मैं रिस्पेक्टेड जो जजेस 3 आए हैं, द श्री ज्ञाति काचो सर एंड डॉक्टर मदंग रीता मैडम जी एंड देन सोलोमन सर जी, तो उन सभी को मैं रिस्पेक्टेड करता हूँ कि आज आप फर्स्ट एवर ये जो लोअर सुबनसिरी प्रेस सोसाइटी के जो आज जो नेशनल प्रेस डे उसको मना रहा है, उनमें आप आए हैं, तो आप अच्छा लगा देख के हम भी। एंड देन हम ये LSPS को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। क्यों बोलेगा तो हमको याद करके आज का दिन में हमको यहाँ बुलाया है
और ये यहाँ में जो ऑर्गेनाइजर चेयरमैन है श्री तलियांग पुगा, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो हमको याद करके आंसू को बुलाया है। एंड थर्डली हम ये कहना चाहेगा कि जितना भी आज तक हमने देखा है कि यहाँ जितना भी मीडिया ग्रुप है, हमें लोअर सुबनसिरी के अंदर में क्या चल रहा है, अच्छा क्या है, ख़राब क्या है, हमें बता रहा है। अगर आज उन लोग नहीं होता तो हम लोग को कुछ पता नहीं चलना था। तो आज देखा जा रहा है कि मतलब हमारा लोअर सुबनसिरी में हम लोग कितना आगे बढ़ रहा है और कितना पीछे है, उनको देखने मिल रहा है उनके द्वारा। आज मीडिया ना होता तो हम सच में आज हम ये पता नहीं चलना था। एंड देन हम ये सेंट क्लैरेट मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट से हम ये कहना चाहेगा कि आज आप लोग यहाँ पार्टिसिपेशन करने के लिए आए हैं, और जो यहाँ फाइनल ईयर स्टूडेंट से भी आया है एंड द फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर जितना भी आए हैं, तो फ्रेश क्लब ये LSPS का जो मेंबर है उन्होंने कहा है कि ऑलरेडी आप लोग को आफ्टर ग्रेजुएशन या फिर मास्टर करने के बाद भी आप लोग को यहाँ अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा बोल रहा है। आप उनको भी ज़रूर आप एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि कल को जाके शायद यहाँ से कोई बच्चे भी आएंगे तो आप लोग ने जो ये वेलकम किया है उसको भी सुन के हमें बहुत अच्छा लगा है। तो आप लोग भी रेडी रहिए कि कल को जाके हम लोग भी यही काम करेगा बोल के। तो ऐसा बात नहीं है कि रहा है कि पहले उनने भी बोला है कि ये सिर्फ जगह नहीं है, आप लोग का ये जो मास कम्युनिकेशन है उसमें आप लोग को पता है कि बहुत सारा है, वीडियोग्राफ है या फिर फोटोग्राफर है, बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। तो उनने भी यही कहा है, आपका ऊपर बनता है कि आप करना क्या चाहिए, लेकिन आपको पता चलना है कि आप किस चीज़ में पढ़ रहे हैं, उससे जाके आपको पता चलता है कि आप आगे कैसे बढ़ना है। तो आप भले रहिए आपके स्टडी को, उसके बाद आगे जाके आप क्या करना है आप खुद देख लीजिएगा। और लास्टली हम यही कहेगा कि LSPS को हम यही धन्यवाद बोलेगा कि आगे भी आप लोग यही काम अच्छे से काम करिए, और नेक्स्ट टाइम भी हम लोग को याद कीजिए। अगर कुछ हमसे भी मतलब काम है तो हम लोग को भी सीधा बोलिए कि हम लोग हमेशा हम साथ रहेगा आंसू टीम जो। तो हम यही अपना वर्ड को समाप्त करना चाहेगा। थैंक यू। तो यहाँ हम हमारे जो सेंट क्लैरेट कॉलेज के जो मास कम्युनिकेशन के HOD सर है, जैसे कि उनको सब सोलोमन सर बोल के जानते हैं, तो मैं भी उनको सोलोमन सर ही कहूँगी। प्लीज़ आप आइए और आपका जो चंद शब्द है वो सब हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी आप यहाँ रखें। थैंक यू सर। आइए। First of all, happy National Press Day to everyone. Yeah, even mass comm students, you are part of the journalism now. So before I give my insight or viewpoints, I would like to congratulate all the students who have given their best here. Like Rita ma'am was mentioning that when you come forward and standing here, that's another thing. When you sit back, is different thing. I would say that before the result is declared, everybody is a winner. The way you have come here and express yourself, do not think that you, even if you're not able to speak up also, that's also the step you have taken to that will have that is a progress in your life. For us also, we have come from that stage where we feel very hesitant to come to the stage and to speak something. However, everything is a learning process. So from this one, do not shy away. From this point on, do not shy away from coming to the stage and speak something. You are you are all well acquainted with the topics, but the way you're not able to express yourself because of the stage fright. And this stage fright can be easily overcome through practice. Okay, and that I am sure that you have to be always try to give your best in everything. Right. So coming to this National Press Day, I will not want to give any long lectures, but I just want to reflect on why do we celebrate National Press Day. National Press Day is celebrated on the establishment of Press Council of India. Press Council of India was instituted as in memory of, in remembrance of to commemorate that establishment of Press Council of India. National Press Day was celebrated. This National Press Day is celebrated, or this particular day is taken out for the journalists to what we call highlight the importance of freedom of press. Now in this universe, in India as well as in the abroad, everybody is talking about freedom of press, freedom of press. In India, luckily we have a freedom of press. The government does not
are not very strict in terms of muzzling of voice. If you compare with press in China and North Korea, it's a completely different thing. We are very fortunate enough to have this freedom of press. However, it's our duty also to exercise this freedom of press in a responsive manner. All the rights, freedom is not absolute. There should be something that's why the word, the gatekeeping, media gatekeeping. We cannot just simply lash out or publish anything that we want. We have to be responsible enough, right? And the second objectives of this Press Council of India was in order to check in order to maintain the standard of press in India. It's not only about giving training or looking after for the welfare of the journalists in India. However, it is also to maintain the standard. It means that all should not, like the way we are talking about Koti media and all these things, the media standard should not go down, right? But sadly, at this present era, if we look at Indian journalism, as today the topic also kept in journalism in India, it's very saddening to see that in India at present, most of the journalists are hero worshipping. That's it, the angership. All the media wants to be a celebrity. That should not be our main motive. Our job is to inform and to educate or to give information to the people. We are not here to make friends. We are not here to be a celebrity. Like say if you look back to this history, during the freedom struggle, or when India was fighting for the independence, let's remember the contribution of Mahatma Gandhi, Dr. B. Ambedkar, Bal Gangadhar Tilak, Jawaharlal Nehru. They are all very brilliant journalists. Most of the students are studying in your book a topic about Gandhian journalism, Ambedkar journalism, and how Bal Gangadhar Tilak and this other freedom fighter use media in order to further their cause for the good purpose. They have not got any training. There was no organized or there was no course structure that they study about journalism. But they are one of the best journalists in India. Why? Because their motive is not to become popular. Their motive is not to make money. Their motive is not to please someone. Their motive is to render service to the society. And that's why even journalists, our main motive has to be to render service to the people. Right, so after coming to this celebration of freedom of National Press Day, after this independence, after we attain independence, once everything like say media started functioning properly, at that instance media played a very important role in partition or transitioning from colonialized period to the independent state. That time the journalism was very, very good. However, very sadly during the emergency period, the media voice was muzzled. During the reign of Indira Gandhi, there was an independent period, and that particular period was also considered as the dark period of journalism. So many journalists were thrown into jail, so many were put under the sedition law, and many agency journalists from abroad also were excommunicated from the Indian soil. So after that one, there was always a call, or everybody was demanding for some kind of council that should look after the welfare of the journalists as well as to maintain the standard journalism in India. So they were, in fact, after that one, after the emergency, 2 press commissions were formed. The first press commission also, they recommended that the Press Council of India has to be set up. But unfortunately, that could not be materialized. And when the change in the government, and they set up another second Press Council of India again. They also the same thing. Press Council of India has to be set up, and through that result, through the Press Council of India was formed for the journalists, for the welfare of journalists, to look after that one. Now that the
because of the efforts put up by the Press Council of India, the journalism in India, in fact, are well taken care of. It means that even though there are safety issues, security issues of India, also it is another topic to debate upon. But I think for journalists, it's in India is a very good place or very good country for you to work, and that you can report objectively. It's not like other countries. So for the students as well as for the journalists also, it's very important that you also make use of this provision provided by the Press Council of India or the certain press freedom that is given to you, but do not misuse it, and that you also try to work for the people, for the service of the people. If you look for, like says, one students were trying to explain commodification of news. If you started looking news as a commodity, if you started looking news as a commodity, that's where the misrepresentation of people also let's say of the news also came into existence. That we always say the media are not represented properly in mainland India, and that's because of the commodification of news. We are started commodifying news. Whatever the flood that's happening in Assam, people are not interested in it. Even the journalists from here also are not very much reporting on it. Why? Because if you reported one, there will be not people reading. They are more happy over the Baba say, yeah, Amitabh Bachchan kya sabji kha raha hai, kya fruits kha raha hai. They are more interested in that. So the change has to come from everyone. Doesn't matter that you are a student. Do not think that you cannot take a center stage in the mainland India. Have a belief that you can do some change in the society. Right. So if you start changing, and if the journalists from Arunachal Pradesh, if you start changing, obviously your voice will be heard. There is now in this age of mobile journalism or online journalism, the audience are unlimited. You can reach out to any people you want. But the thing is that your content has to be original, and that you have to have a passion for journalism. I think with this this one thing is in mind, I want to wind up my short speech by saying that journalism in India needs to reinvent itself, and that we can do it, and we have to take the step from our own end. Thank you, everyone. यहाँ पर हमारे जो सबसे स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको हम यहाँ पर स्पीच के लिए बुलाना चाहते हैं, उनको हमने लास्ट में इसलिए रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि उनसे हम बहुत इनकरेजिंग स्पीच सुने। तो अभी हम मंच पे बुलाना चाहेंगे सर ज्ञाति काचो सर, आप आए और यहाँ पर बच्चों को आपकी तरफ से कुछ नॉलेज या कुछ आइडिया दें। सेक्रेटरी IPR आवाज डॉक्टर मुदांग दारुरिता, Secretary IPR Aya Tagerika, ASU IPR Committee Member Habung Mebi, LSPS Organizing Secretary Talyang Pegang and all the members of LSPS, LSPS Legal Advisor Habung Ape, St. Claret College Mass Communication Head of Department Solomon, and all the students gathered out here from St. Claret College. Now the students of St. Claret College, how many of you have seen me when I came to your college? Raise your hands. Anybody? Yes, I've been there already to your college 2-3 times on a number of occasions. I think this is our third interaction meeting. Last year also I had been invited to speak during your National Press Day. How many of you were there last year? Raise your hands. 3. Okay. Fine. What is media? Media is where I stand today. Media made my life, my career. Okay? I'm speaking here in front of you. I stand here in front of you as Dipro, Lower Subansiri district, as a dignitary. It's all because of media. I'll tell you how. I want to see from you, students of mass communication from St. Claret College, in one word, why do you want to become a journalist? Anybody can tell me, why do you want to be a journalist? Anybody? Why do you want to be a journalist? Is it for money? Is it for fame? Is it for status? Or for what? Anybody?
Service to the society. Good. Anybody else? Become the voice of people. Voice of the people. Fine. Anybody else? The truth. Serve the truth. Fine. My concept of journalist is passion. Passion. Okay? Passion is above anything else. Your caliber, your attitude, your interest, your choice. That is passion. Okay? I became a journalist out of my passion. I didn't clamor for money, for fame, anything. It was my passion. I wanted to do it. That is how I got into Indian Institute of Mass Communication in New Delhi in 1999. After competing with thousands of students all across India. There are only 10 seats for ST students of all India, and which comprises a batch of 50. I was the 8th ranker in Indian Institute of Mass Communication, Millennium Batch, 1999 at Delhi. Okay. That is PG Diploma in Mass Communication. When we talk about mass communication, it is not only about print media. We had mass communication related to television journalism, radio, advertisement and public relations, Hindi journalism, and that time we didn't have any social media. So we were confined to that, and I got selected into print media. I did 1 year of course at IIMC Delhi. After that, our campus recruitment happened. You know, it depends upon your performance. If your performance is good, you'll be selected by the best of the leading newspapers or the TV channels. So since I was a student of English journalism, I was the 8th ranker. I was selected by the Indian Express to serve their industry. So I worked with Indian Express for 2 years. And in the meantime, when I was working, our former Chief Minister, Mr. Gegong Apang, he came to Delhi and he said, "What are you doing here?" I said, "Sir, I'm a journalist. I have seen your work. You're doing excellent job out here in Delhi. But people here in Delhi, there are so many good journalists, Indian good journalists are there at Delhi. Why don't you come back to Arunachal Pradesh and teach journalism to our students, to our upcoming journalists, and work at my media house, that is Arunachal Times." So I came back to Arunachal Pradesh on the request of then Chief Minister, Mr. Gegong Apang, and I worked with Arunachal Times from 2004 to 2007. That is which made my career, my life. Because I always used to write news stories. In between, Arunachal Pradesh Public Service Examination was conducted, and I did not appear in 2003. Had I appeared in 2003, that time I was working in Delhi. So since journalism had become my profession, I was not, interested absolutely to take off this APCS exam. But when I came back to Arunachal Pradesh, then my friend circles, and in fact my wife, who's also a state civil servant, she said, "Why don't you take a shot at APCS?" And that is after 13 years of my graduation. I graduated in 1995, took the APCS exam in 2007, got through in 2009 after 13 years of my graduation, and I'm called as the dinosaur of Apatani Plateau for getting into APCS at such a late stage. Why? Because of journalism. I used to work in a newspaper. Every day I used to write 2-3 news stories. General knowledge, GK was absolutely my strength. Because you read newspapers, you always write daily stories. GK, you don't have to prepare. And since I was already into writing so much things, so many news stories, my language flow, everything, it helped me. So that helped me in making my career. Okay. So APCS officer, state civil servant is my second career. My first career, my first priority was journalism, and still it is media till today. Okay, my dear friends, so that's what I said, passion. You have to have a passion, okay? And the speakers, all those who spoke also, this extempore speech, you did well. Some of you had stage fright. Don't lose that. It comes with time. It comes with opportunities. You keep on practicing. So you will lose stage fright at one point of time. But whatever you speak, whatever you do, it has to be from within. Okay, from Dil Se, it has to be from within. I will not dwell much into
Praise the celebration because my former speaker Solomon sir has already spoken. I will not go much into the theory part because I'm a very practical man, and that's what I write regularly for Lower Subansiri district as a DIPRO. Till today, I've just completed more than 1 year. I have written 220 news items till date. Okay. So that is why today also I'll be filing another story. Yesterday I wrote already 2 stories. One Seva Aapke Dwar, and another was this walkathon. Early in the morning, I think some of you, I don't know if St. Claret College students also participated. 10 students, they walked from 6 o'clock to 8 o'clock in the morning. So those 2 news items were published by me. When we talk of news reporting, as Priyanka has highlighted, the first lesson that was taught at IMC is when a dog bites a man, that doesn't make news, but when a man bites a dog, that makes news. So you should look for such kind of uneventual, unique kind of things. That was taught during our first lecture that we had at my IMC. But now times have changed. Okay, times have changed. That is also called sensationalism. So that kind of during our 80s, 90s, sensationalism, bringing into public focus, that was the happening thing. But now, slowly times have changed. It has, refined. The media has also refined, and they look, to the gist. They need substance. So when we talk of substance, my forte, my strength as a journalist is why I was selected and why I was, chosen by, the top media house of Delhi also and in Arunachal also. I like portraying, the common things, not only the common things, I like to give social message. There has to be substance in my writing. When you write a news item, when you compose a news item, either it is, TV journalism, TV or print media, I prefer to, go for a social message, something unique, something beneficial for the society, something beneficial for our people. That is my strength. And that is which stood by me all these years. So when I talk of that, I'll just highlight you one, I'll not go much into detail, I'll just highlight you one thing. This is day before yesterday's news story, okay? This is written by a amateur journalist. Apatani Youth Association initiates mission for clean Clay River. Just 2-3 sentences. Does this make a news report? I don't consider this as a news report. What it is written. On the calendar event for Clean Clay River Day, which was declared by the District Administration of Lower Subansiri on November 13, the Apatani Youth Association initiated the mission for Clean Clay River today. On the mission for Clean Clay River Day, various departments of Lower Subansiri District, a large number of students from various schools and colleges participated in this mission voluntarily by cleaning all streams and nalas around Ziro Hapuli town. The police department headed by SP Kenny Bagra, OC Ziro, and all officers and men also participated in this mission to make the cleaning drive a grand success. Is this a news item? Students of mass communication, how do you take this? Is this a good news item? It's published in day before yesterday's newspaper. Now, this is written by an amateur journalist. This is my news item. I'll read it out to you to make the difference, okay? AYA leads 9th edition of Mission Clean Clay River. Let us prevent Clay River from turning into another Yamuna, Taki Taki. This is my headline. The social message that I'm trying to portray, okay, this is reflected in my news item. Let us not allow our lone river to turn into a dirty river like Yamuna, and we should all make concerted efforts to save our dying Clay River, said local MLA and Minister Agri and Allied Engineer Tage Taki while participating at the 9th edition of Mission Clean Clay River here yesterday. Elaborating more on saving the Clay River from pollution and maintaining its cleanliness, Minister Taki appealed the dwelling house owners located near the river not to release the household water directly to the river, but to treat it prior to its release to the river. Further, Taki also
pointed out that it was not possible for Apatani Youth Association or the district administration to continue hand-holding the cleanup operation for a long time, but it was the conscientious duty of the citizens of Ziro Valley to keep their Lone River clean. What I want to highlight out of this is a social message. How do we keep our river clean? This is the story filed by an amateur journalist. I called up Tagetaki, I called up Deputy Commissioner, I called up Aya President. The quotes of DC, Aya is all given here. I'll not go much into details. Okay, so this is just one brief highlight I'm trying to tell you. When you file a news item, it has to be very comprehensive. Substance, social message has to be there. That has remained my strength always, which helped me in the long run. Try to bring out something which is going to be beneficial for the society at large. This is what we need to do as a true journalist. Not just you just highlight something, this has happened, this has happened, this has happened today, this is going to happen. Nothing. What is the underlying truth? What is the substance? What is going to benefit the people, the society, the place at large? That is what you need to focus at. You need to work extra. You need to put in more efforts. This is what I'm trying to highlight. I could have also just did, because I'm getting salary from the government, I can just sit at home and then write the story. This has happened, so many people took part at the Claret River, then it was done very nicely. Nothing. I put in extra effort. I called up the minister. I called up the DC. I called up the Aya President. I called up the Awaj Ka President and Secretary. What is your message for the people of Ziro? How should we keep this Claret River clean? It took me time. It took me effort. This is what you need to do as a journalist. This is a cutting edge. This will take you in the long run. This will bring you, the normal journalist and, the substantive journalist, the real journalist. This is what you need to do. You need to put in extra effort, extra energy. Put in some spice, which is going to benefit. This is called, what do you call that in mass comm language, English journalism? Television wala call it bites. You call bites. TV journalists, they call it media bites. In print media, what do we say that? Students, anything? It is called attribution. The technical term is attribution. It is called in print media journalism. Okay, you should know this. When you file a story, you should have minimum 3-4 attributions. That makes a story solid. Because you cannot, as a journalist, we are the watchdog of a society. You cannot lace it with your feelings. You cannot, portray your feelings. This is what I feel. This is what I want to do. You cannot do that. We are not made to do that. You have to attribute somebody. You have to take the quote of somebody. Because we are here, mirror of the society. We have to reflect what they think, what they say. This is our duty. I cannot say, I am the pro, I feel like this. This is what should happen. This is not my duty. You cannot do that. That will be unbecoming of us. But we are the society, we are the watchdog of a society, we are the fourth pillar of a democracy. We have to, highlight, portray what the second person, what others feel and what others are inclined to. My dear student friends of mass communication, English journalism, this is what you need to do, some of the lessons that I'm telling you. And another thing, as I said, I think who had highlighted that, coming up students publishing a tabloid. That is what we used to do during our days at IMC Delhi. We were assigned a task, batch-wise, come up with a weekly publication. You should be, the people here, Lower Subansiri Press Society is there. They can be made into batches. Let them have an interaction. Come out with a publication. I think last year also I had given this advice. Until unless they exercise, unless they practice, students, they'll not be refined. They are journalists in the making. So I request Solomon sir also, involve the students, give them assignment, work assignment. Let them go to the local media houses out here, LSPS. Let them visit and then let them file some stories, or they could visit my office also sometime. They can come to my office and then ask. I can give them some assignment today, just as I highlighted. You ask some of the students to make today's news reporting. So, they should be, that is what we were made at. While there at IMC,
every month we were given 7 days field assignment. So field assignment is very important part of a journalist, upcoming journalist. So since so many media houses are here now, you can ask, you can depute some of your students to definitely come and make a round and then associate them with so many press houses are there, AMA or AP Direct, or give them some students. Let them learn upcoming. This is how their careers will be built up. That is one thing. And then regarding my work experience at the Arunachal Times, my dear previous speaker Habung Ape said very correctly, courage. I'd like to reiterate whatever he has said, courage. I worked for 4 years at the Arunachal Times as assistant editor and editor. It took a lot of toll on me physically, mentally. That time during the late 90s and early 2000, media was still at infant stage. So, we used to work and single-handedly we used to handle the media. We had so much of tough times. Unlike Delhi, when I was working in Indian Express Delhi, we were allocated shift-wise, either in the morning, afternoon, or in the evening. So evening wala is the last shift. So sometimes I work in the day, in the morning, sometimes in the noon, then in the evening. Ultimately, when the newspaper is published in the morning, you do not know whose story it is, because so many journalists are there. If it is my morning task, morning duty period, I used to file that story, whatever I got to know, and daytime some other journalist will come. He or she will file her own part. Third journalist will come in the evening. He or she would do the final touch. Next day, the paper is published like this. Then it becomes very authentic. Now you do not know whether it is your story or her or his, but it has become a very compact and very authentic story it becomes. That's what happens in national dailies like Times of India, Indian Express. There is no scope of any error. There is no scope of any doubt. But unlike that, in Arunachal Pradesh, it is one-man army. People like them also, like me also, whatever we do, it is straight away carried away, it is published. That is what happens in Arunachal Pradesh, and which is a very, big threatening factor also. Either it is good or bad. While I was working in Arunachal Times, I had lots of tough times where, you required so much of courage. I should not be taking the names, but then I will say some of the organizations, so many organizations like APSU, ANSU, so and so. I will not name the person. They used to come to my office. They used to say, what is the status of an editor, sir? Is it equivalent to DC? Is it equivalent to executive engineer? What is the status of the editor or assistant editor of a news channel or a newspaper? I said, we have no status. We are the fourth pillar of a democracy. We are the mirror of your society. How you behave, it is reflected. We do the reflection. If you're good to us, we are good to you. If you're bad to us, we are bad to you. Then they say, this is not done. In Arunachal, nobody likes negative news. How dare you publish negative news against us? You have to, don't do that. Take back, come out with a corrigendum. My minister, my MLA is very pissed off with you. Why did you write against him or her? How dare you write? I said, this is the fact. Evidence is here. Proof is there. We are the watchdog of a society. If it is good, I highlight good. If it is bad, I highlight bad. That is what it is, not my thought process. It is the evidence, the attribution is given by the public. Public wants me to publish, so I am publishing. It is not that I am publishing on my own. You go and speak to the public, the one who has fed the news. Why don't you discuss with them, not with me? Please come, if you have something, if you have anything else to publish, we'll publish that also. But please don't bother me with what others, public have fed me. You go and speak to the stakeholders, not me. We are a middleman. We are an independent media industry house, so please don't bother. If you have anything, any method to be carried, we will carry that also. So this type of things, keeps on happening. And sometimes
aggrieved minister would call me. They will say, we will file a 5 crore ka defamation suit against you. You have carried this news. You have tarnished my image. Elections are coming. You have come up with such negative stories. That is where courage is necessary. I used to go to the bungalows. I said, sir, this is the proof I have. It's not my making. I don't know. I don't do any investigative journalism. I'm not an investigative journalist. We are single one-man army. Whatever public gives us, we carry that. So this is the evidence that I have. What can I do? Tell me how to, make the errands, to do the recorrection. If you have anything further, from your clarification from me, and we will do that also. But please don't let us not, run around the courts. This kind of things, practical sides I'm highlighting you, keeps on happening. So you need to have guts. You need to be daring. Okay. I could have been still in this profession, but I go through state civil services after 13 years of my graduation, and I wanted to be an IAS officer. I studied in Delhi, but I could not become an IAS officer. But I got into journalism, IIMC, which is the premier institute of mass communication in India. So I thought perhaps God has given me another. I aimed for the stars, but I landed at the moon. So I said, why not? Give me an opportunity. Then I came back to state. Again, I competed with best of the brains of Arunachal Pradesh. 15,000 students I competed after 13 years of my graduation. Again, I got through. So I said, journalism, I can come back anytime, even after my retirement. But government job, there is an age factor. And this was my last attempt. I got through government job after competing with 15,000 students of Arunachal, the best brains of Arunachal Pradesh. So I said, let me try a government job also. And since journalism is my passion, my first priority, after my retirement, I might come up with a press of my own also. Because I know the basics. The concept is still with me. So here, my dear friends, I'm here as a government, civil servant, fortunately as DPRO in charge. But since I come from this background, I'm under transfer to Itanagar, okay, from here. And I went down to my IPR department, head, the directorate, and I requested the secretary, the minister, the director, to kindly send a reliever next DPRO here at Ziro. They said, you are doing much better job than the regular DPROs of Arunachal Pradesh. You be here at Ziro so long you want, because you come from mass communication background. You are doing such a wonderful job out here. You are doing better duty than the normal DPROs of our department. So you can continue as much as you wanted at Ziro. That is what they said. But I said, sir, please excuse me, although I have journalism background, but my parent department is skill development and entrepreneurship. So I need to go back to Itanagar. So I am not here for much of a time. Perhaps I'll be here at the most for a month or two. So, but anyway, so long we are here together, and I'm really grateful to LSPS for giving me an opportunity to share my small insights, viewpoints during this prestigious National Press Day. Unfortunately, last year we could not be together because you all had gone down to Itanagar, and I was there at the St. Claret College to give the keynote speech. And when I talk of that, but the other side of a positive, I have highlighted the negative side of journalism. Now the positive side of journalism also is still there. Friends, students, don't get discouraged, don't get disheartened. Now I've spoken about the negative side of media. Let me go small aspect regarding, highlight a small aspect about positive side of media also. Okay, don't get disheartened. Now positive side is that couple of ministers also they approach. Some are bad, some are good in society. After seeing my work for 4 years in Arunachal Times, the present Union Minister, Mr. Kiran Rijiju, who was my senior at Delhi University, he says, Kacho, you are writing such wonderful stories. Why don't you establish a press of your own, media house of your own? I'm going to finance you. Then similarly, my former friend and former MLA from Itanagar, Kipa Babu, he also called up, let us come up with this thing, media house. Then another very wealthy engineer, he also gave me an offer.
how much does it cost to establish a newspaper industry? I said, it is 5 crore. I said, we will finance. I got 2 offers. One from the politician side, one from engineer side. I could have come up with a newspaper industry of my own long time back. But as I told you, having got into state civil services, I could not do that. And since media industry was very new during those times, so I said, let me think it over after my voluntary retirement or after my retirement. So that is what happened. Don't get disheartened. Troublesome times also will come, tough times you will face, but you have to know how to overcome them. I have overcome them, and I had good times, I had bad times. No, it's both mixtures. So my dear friends, don't lose heart. God sees the truth but waits. Keep up your good works. Don't get disheartened by small strange instances that keeps on happening, okay? But your focus, your passion, as I say, it should be always alive. You should always keep alive your passion. Good times will come. So media is all about, portraying the correct picture, as I said, ethical journalism. That is very true. We have the speakers, we had, spoken on so many good topics today. The topics were really good. And if I go into details, it will definitely take a long time. Gaudy media, commodification of news, ethical reporting, neutrality in reporting, media gatekeeping, media control, role of media in society, media advocacy, and so many things. And I wanted really somebody to speak on sting operation in journalism, which was one of my top pet topics. One of my friend was there. His name is Kunal Chauhan. I don't know whether most of you remember Tehelka episode. Tehelka was a very big episode that happened in national media. And my friend, my colleague from IMC 99 batch, Kunal Chauhan, he was a part of that sting operation. So if somebody had spoken on sting operation in journalism, we could have discussed further. But anyway, I think I'll not take much of a time. So since this is our first meeting, and I once again thank you, the members of LSPC, for inviting me out here, and students of journalism from Mascom from St. Claret College. Even if I'm here in Ziro, or even if I'm not here, I'm based there at Itanagar only. And as I said, you can reach out to me. Solomon sir has my number. And in case of any, confusion, in case of any clarity, doubt as far as media is concerned, so I will not be able to dwell much on the topic out here in the dais because so many speakers are there. It is a public function. Somebody wants to be a serious journalist. Somebody wants to make a break in journalism and wants to make journalism a career, either in Arunachal Pradesh or beyond Arunachal Pradesh. I still have contacts at Delhi. It's so many people. My batchmates are doing very good in journalism. They are based at Delhi, and some of them, they are even working abroad. Some of them are even in London, Europe. They've all branched out. They've become very senior journalists, my batchmates from Delhi. So, you guys can always get in touch with me in case of any clarity, any doubt. My, opinion is 24/7 will be open for you. You can always contact your HOD and get back to me, okay? So I wish you all the best. Thank you, members of LSPC, once again for giving me this opportunity to speak. Thank you once again. Good day to all. उनको फ्यूचर्स में भी ज़रूर काम आएगा. जो विनर है, एनी गेसेस? कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा रहता है. मेरे लिए तो सभी यहाँ पर विनर है. सभी ने यहाँ पर आके पार्टिसिपेट किया, वो बहुत बड़ी बात है. तो विनर है सोरंग मीना. राहों में कांटे तो रहेंगे, उसको हटा के आगे बढ़ना है. उन्होंने जीता है 10,000 रुपीज़ विद सर्टिफिकेट.
इस बार तो हमारा फर्स्ट एडिशन है, तो हम अगले साल ज़रूर कोशिश करेंगे कि और भी बढ़िया बढ़िया कंपटीशन हम रख सकें। करते हुए वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए तगे ताजुंग सर को आमंत्रित करना चाहूँगी, जो कि हमारे LSPS के ऑडिटर सर हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा हुआ है। तो बिफोर आई स्टार्ट माय वोट ऑफ थैंक्स स्पीच, आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट ऑल द पार्टिसिपेंट्स ऑफ द विनर ऑफ द स्टैंपल स्पीच। On behalf of Lower Subansiri Press Society, LSPS, I would like to express our sincere gratitude for your presence here today. Your support and participation have made this event truly special. It's given me immense pleasure to deliver vote of thanks for this event to all the dignitaries assembled here. First of all, I would like to thank today's judges, Gyatikacho Sir, Dipro, Lower District, Horen Longteng, HOD, Mass Communication, Central College, Ziro, Dr. Madang Rita, Madam, IPR, Abaz, Apatani Women Extension, Ziro, और स्पेशल इन्वाइटीज Tage Riku, IPR Aya, Habung Mibu, Convener Asu, Tiling Tari, IPR Ajaya, Doni Natung Sir, Assistant Professor, Central College, Ziro, Milo Kado, Assistant Professor, St. Claret College, Ziro. And our beloved today audience for the making this function as a grand success. I would like to extend our heartfelt thanks to today's esteemed speaker and invitees who's made shared their valuable insight and expertise. Your presence has made this gathering on इंसाइटिंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस। आप लोग का वर्ड से सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला। शायद जितना भी यहाँ का स्टूडेंट है उन लोग भी शायद उन लोग का जो पॉइंट है, उन्होंने जो सजेशन दिया है उन लोग को दिल में लिया होगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू एक्नॉलेज आवर इवेंट्स स्पॉन्सर एंड पार्टनर फॉर देयर जनरस सपोर्ट, स्पेशली आवर हॉनरेबल MLA Tage Taki, Engineer Tage Taki Sir, Minister of Agriculture and Alliance, Engineer Hagi Appa Sir, retired Chief Engineering, and he also the MLA candidate of the 17 Lower constituency, and Tage Lalin Sir, AP Media, Hagi Penji Sir, Amaba, and Habung Ape Newsjet. Your contribution has been instrumental in the making this event a success. Thank you so much for your इवेंट्स कंट्रीब्यूटर। आप लोग का छोटा छोटा जो कंट्रीब्यूटर है, अगर शायद आप लोग को शायद पता भी होगा कि हम लोग का मीडिया पास कुछ ऐसा पैसा नहीं है, हम लोग का इनकम नहीं है, फिर भी उन लोग का जो कंट्रीब्यूशन है, उन लोग का छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन से आज जो इवेंट, जो इतना बड़ा इवेंट जो करने के लिए हम लोग को सक्सेस हम लोग को मिला है, उन लोग का दौरान से मिला है। एज ए स्पेशल वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन goes out to our dedicated to the events organizing secretary Mr. Tanyam Pegang and his team, who worked tirelessly behind the scene. Their hard work and dedication and attention to the details have ensured the smooth function of this event. And thank you all of you. आज जितना भी यहाँ का जितना भी पार्टिसिपेट है, यहाँ का जो एंकर हो, यहाँ का जितना भी हम लोग का कैमरामैन है, वीडियोग्राफर है, और सभी को मैं थैंक्स देना चाहेंगे कि आप लोग का कारण से आज ये सक्सेसफुल हुआ है। तो बिफोर आई कंक्लूड माय वोट ऑफ थैंक्स स्पीच, सो आई वुड लाइक टू शेयर सम इनकरेजिंग वर्ड फॉर आवर यंग स्टूडेंट ऑफ द सेंट क्लेरेट कॉलेज। मैं आप लोग को शायद मालूम है कि आप लोग का जब कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि ये मास कम्युनिकेशन में ये 5W1H बोल के ना, कॉमनली आप लोग सब जानते हैं ना, वन वाई वाइस ये सब होता है। उसके बाद मैं आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि उसमें जो M वर्ड है, जो हम लोग का फील्ड ऑफ जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। M वर्ड, M फॉर मीडिया, मीडिया मीन्स मीडियम, मीडियम मीन्स मीडिएटर, एंड उसके बाद M फॉर
आप मिरर भी कह सकते हैं, मिडिल मैन भी कह सकते हैं, और लास्ट में आता है मास्टर, एम फॉर मास्टर। तो ये मास्टर एग्जैक्टली क्यों बोला जाता है? क्योंकि मीडिया ऑलराउंडर होता है। आप एक ही नॉलेज में ध्यान देके उसमें आप लोग आगे नहीं बढ़ सकता है। आप हर चीज़ में, आप साइंस हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिशियन हो, जो भी पहले हर चीज़ का नॉलेज आपको होना ज़रूरी होता है, तब जाके आप मास्टर बनता है। तो जर्नलिस्ट एक मास्टर होना पड़ेगा आपको आगे बढ़ने के लिए, ताकि आदमी को बता सकने के लिए कि आप मीडिया है तो आप एक मास्टर बन के तभी तो आप ये मैसेज दे सकेगा ना पब्लिक को, ये है, वो है, ठीक है, सही है, अच्छा है, गलत है, सब कुछ बता सकता है। और एक चीज़ लाइफ में हमेशा एल्डर लोग बोलते हैं, कहा जाता है कि अगर आप जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, तो आपका पैर दो ये नाव पर खड़ा होकर आप नहीं चल सकते हैं, आप फेल हो जाते हैं, आप नहीं कर सकते। आपका जो पैर है, दो नाव पर खड़ा होकर आप लाइफ चलेगा तो आप गिर जाएगा, सक्सेस नहीं होगा। लेकिन ये मेरा सोच है, ये जो कहावत है शायद हम लोग का जो जर्नलिस्ट फील्ड के लिए, मीडिया के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है। इसका हम रीजन बताते हैं आप लोगों को। क्यों बोलने से, मीडिया मीडियम होता है, मैसेंजर होता है, और जस्ट एग्जांपल आप लोग को, क्यों हम लोग ये दो पैर पे रखने से सक्सेस नहीं होगा, लेकिन हम लोग का जब जर्नलिस्ट फील्ड में, मीडिया में जब आता है ना, आपका कंपेल हो जाता है कि दो नाव में पैर रखना जरूरी होता है हम लोग का। मीडिया का ये होता है, क्योंकि आप कहीं में भी जाओ, आप एक मीडिएटर है, एक मीडियम है, मैसेंजर है। चाहे आप रूलिंग पार्टी में इसका इंफॉर्मेशन ले लो, और उसका ओपोजिशन को भी लेना पड़ेगा। आप सिर्फ रूलिंग पार्टी का आप न्यूज़ नहीं कैरी कर सकता है। अगर रूलिंग पार्टी कुछ बोला है तो ओपोजिशन पार्टी का भी आप उसका सजेशन लेना पड़ता है। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो चलाता है, तो उसका मैसेज को पब्लिक को पहुंचाना पड़ता है, तो पब्लिक का मैसेज को फिर एडमिनिस्ट्रेटिव को पहुंचाना पड़ता है। इसी तरह ऐसा बहुत सा है, नेगेटिव पॉजिटिव, आप दोनों में आप पैर रखना पड़ेगा, तब जाके आप पब्लिक को आप अपना मैसेज दे सकता है, एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया। इसलिए हमेशा आप लोग ख्याल रहो कि ये जो आपका एम है, एम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी भी आपको हम गिन के बताया है। अगर सपोज अगर आप एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया, अगर सिर्फ एक पैर में खड़ा करके आपका जो न्यूज़ को, आपका प्रेजेंटेशन को देगा, पब्लिक को बताएगा बोलने से, उसको वो हम लोग के लिए नेगेटिव हो जाता है, उसमें बाइस आ जाता है। अगर आप एक पैर में सिर्फ खड़ा करके एक ही जगह का आप रिपोर्टिंग करेगा तो आपको 22 जर्नलिस्ट कहा जाता है। तो ये चीज़ को आप समझ लेना है। हम लोग मीडिया में जब आप दो नाव में पैर रख के चलेगा ना, तभी आप सक्सेस होगा। सिर्फ एक ही जगह में आप पैर रखेगा तो आपका सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि हम लोग को दो पैर में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कहावत, इसलिए मैंने कहा है कि ये कहावत शायद हम लोग का मीडिया के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि मीडिया कंपेल हो जाते हैं कि दो पैर में रखने के लिए, दो नाव में चलने के लिए, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव, अगर कोई लोग कहते हैं कि नेगेटिव का जो न्यूज़ को कैरी नहीं करना है, लेकिन ये नेगेटिव न्यूज़ को भी न्यूज़ कैरी करना है, लेकिन जज कौन करेगा? आप नेगेटिव इस न्यूज़ को भी पब्लिक को बताओ, लेकिन इसको पब्लिक को पर रख दो, वो चीज़ को पब्लिक डिसाइड करेगा। हम लोग डिसाइड करने वाला नहीं है। मीडिया, हम लोग जर्नलिस्ट, हम लोग डिसाइड नहीं करते एक्चुअली, हम लोग डिसाइडेबल नहीं होता है, वो पब्लिक डिसाइड करेगा। वो हम लोग सिर्फ इंफॉर्मेशन देगा, हाँ ये आदमी ऐसा बोला है, ये बोला है, लेकिन वो सही बोला है ना गलत बोला है, वो पब्लिक जांच करेगा। तो हमेशा हम लोग को एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया, हमेशा हम लोग का पैर को दो जगह में साइड रखना है। आपका हर एक नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, हर एक जगह पे आपका जो पैर जो दो जगह में रख के आप चलना पड़ेगा, तब जाके आपका जो मैसेज है, आपका जो इंफॉर्मेशन है, वो आपका ट्रूथ आएगा, सक्सेस आएगा। हाँ, ये ऐसा बोला है, ये आपका रूलिंग पार्टी ने ऐसा बोला है, ना अपोजिशन ने ये बोला है, आप पब्लिक डिसाइड करो। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव का ऑर्डर ये निकला है, पब्लिक इसके ऊपर क्या कहता है, पब्लिक इसको लागू करेगा ना नहीं करेगा, तो फिर पब्लिक का व्यू जानो, फिर पब्लिक बोलेगा नहीं ठीक नहीं, फिर इसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव का जाके फिर बताओ। तो ऐसे करके हमेशा हर जगह पे दो जगह में खड़ा होना पड़ता है। चाहे आप, जैसे कि अभी जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो वार हो रहा है, आप सिर्फ हम फिलिस्तीन का जो
चीज़ को अच्छा ही है, वो अपना कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बोल के उसको सिर्फ न्यूज़ दिखाने से वो नहीं होगा। अगर इजराइल का भी सुनना पड़ेगा, वो क्यों, तो वो क्या कह रहा है, तो दोनों को मिला के पूरा इसका कन्वर्शन करके उसका बाद पब्लिक को बताना पड़ता है, ये ऐसा बोला है, फिलिस्तीन ऐसा बोला है, इजराइल ऐसा बोला है, तब जाके आपका जो मेन आपका जो इंफॉर्मेशन है वो आपका मेन ट्रूथ आएगा, उसमें सही आएगा आपका जो मैसेज देने के लिए। तो वही था, ये छोटा सा जस्ट इनकरेजिंग वर्ड के लिए आप लोग को हम बताया है। तो लास्टली, थैंक्स ईच एंड एवरी वन ऑफ यू प्रेजेंस हियर, योर प्रेजेंस हैज मेड ए डिफरेंस एंड वी होप दैट and the knowledge and connection gained today will have a positive impact on all of us. Thank you once again, and we look forward to future opportunity to come together and make a difference. तो इसी तरह आने वाला साल को भी हम लोग यही जगह पर, शायद जगह भी चेंज हो सकता है, लेकिन उम्मीद करते हैं फिर इस तरह हम लोग दोबारा आने वाला साल में इस तरह हम लोग एक दूसरे को गैदर करें। थैंक यू सो मच।